So very good evening all the participants. Today we'll have a look at the PUFE transactions. So first of all, what are these PUFE transactions? Or even these are called avoidance transactions. So P stands for preferential, U for undervalued, F for fraudulent, and E for extortionate. So these are pre-insolvency transactions that should be cancelled or avoided during the CIRP to maximize the value of assets available to the creditors. So once CIRP or liquidation process has been initiated, the resolution professional or liquidator, he will have a look at the books of accounts. So he will investigate the affairs of the corporate debtor. And there is a particular timeline also for these PUFE transactions. He will scrutinize the books and records of the company and look through transactions of the corporate debtor to see whether any such transaction can be termed as an avoidance transaction. Now, in case the RP or liquidator determines any such transaction, he must file an application for the avoidance before the adjudicating authority. Okay. So first of all, he has to find the transactions. The time period is 75 days of the insolvency commencement date. Then it will make a determination 115 days and he will file an application within 130 days. So 75, 115 and 130 days. Whether these timelines are directory or mandatory, these are directory. Now, section 43. What section 43 says? Section 43 says that the liquidator or the RP, he shall apply to the adjudicating authority for an order on liquidation, PUFE transactions. Now, it is a deeming fiction. In section 43, what is the beauty? It is a deeming fiction that if this transaction is entered into, so it means it is deemed that the CD has given a preference. So CD shall be deemed to be given a preference if there is a transfer of property for the benefit of creditor. The word used is for the benefit. Now, what is the difference between for the benefit? They should have written directly to the creditor, security or guarantor. Anybody on this? Why they use the word, why the lawmakers use the word for the benefit and not the word to the creditor? They could have used the word transfer of property to the creditor, Maybe surety or guarantor. directly to creditor or any other person. Right. Yeah. So it could be not directly to the creditor, surety or guarantor, but it could be due to some other person as per the instructions of the creditor Great. for any financial debt, operational debt or other liability. So it should be in respect of an antecedent of financial, operational or other liability. And what is the effect? Such a transfer put the creditor, surety or guarantor in beneficial position in the event of distribution of assets. Because there is a certain waterfall mechanism which is given in section 53. So in the event of distribution of assets, if such a transaction has altered the position and put the creditor, surety or guarantor in a beneficial position, then it shall be deemed to be a preferential transaction. Whether intention is important in 43? No, no, sir. Intention is not important. Simply the fact of the transaction will deem it as preferential transaction. But what is not included? Transfers made in ordinary course of business and any transfer creating security interest in property acquired by CD, provided that such security interest secures new value and such transfer was registered with the information utility on or before 30 days. So these are the exceptions. And the time period is also there. What is the time period? They are 2 years and 1 year. Yes. 2 years for related party, 1 year for. Right. For an employee, what is the time period? For an employee, what is the time period? So for the employee, we have to see whether he is a related party or not. Okay? Because in related party, we will not include a person who is a related party simply by virtue of being an employee. So it is given related party other than by reason of being an employee. So for an employee, it is 1 year. Okay? Any transfer under order of a court is not precluded
Not, the word used is not precluded. What is the meaning of not precluded? Double negative. Precluded itself means negative. Preclude means to keep out. Included. 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 So even if there is a court order and the RP or liquidator feels that there is a preference in entering into such transaction, then it will be deemed as preferential transaction. Now, whether the RP or liquidator can himself term this transaction as preferential, or he has to apply to the adjudicating authority for this. Sir, He has he to had to apply, sir. apply to He has the to apply. Right. governing. He has to apply to the adjudicating authority, and adjudicating authority may or may not consider it as a preferential transaction, because the other party will also put forth his point of view that it is not a preferential transaction. Okay. Now this order of A, it says it shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than CD and was acquired in good faith and for value, because it says for the benefit. So for the benefit may be that it was not directly acquired from the CD. So it will not affect any interest in property which was acquired from a person other than the CD and was acquired in good faith and for value. Okay. Now this is the preferential transaction. Now undervalued transaction. What is this undervalued transaction? Transfer of assets for less than the its actual value. Right. So it says if the liquidator or RP on examination of the transactions determines that they are undervalued, then he shall make an application to the adjudicating authority to declare such transactions as void. And A may order to require back the property to be transferred back to the CD, release or discharge security, require any person to pay sum back. Now, what is this undervalued transaction? If you give something for free, whether it is an undervalued transaction? Yes, yes. Yes. And if the value is significantly less, then also it is deemed as undervalued transaction. Now, who will determine what is the value? RP has filed the application. Now, who will determine whether the adjudicating authority or adjudicating authority will appoint some expert on this? Independent expert. Yes. So section 44 clearly says that the adjudicating, section 45 clearly says that the adjudicating authority shall appoint an independent expert. 46. 46.2. The adjudicating authority may require an independent expert to assess evidence relating to the value of the transaction mentioned in this section. Okay. So transaction is considered as undervalued when the CD makes a gift to a person or consideration is significantly less than the value provided by the CD. And what is the time period? 1 year preceding the insolvency commencement date to any person, within 2 years preceding insolvency commencement date to related party. Please note, in 43 and 45 there is a difference. There, in related party, they specifically excluded the employee, but here they have not excluded the employees. So even if there is an employee who is a related party, period is 2 years in section 45. But in section 43, the period for an employee who is a related party is 1 year. Okay. Now there could be another situation. 43 and 45 talks of the RP or liquidator that he will find these transactions preferential or undervalued. Suppose the RP or liquidator comes to know that there are certain transactions, but they ignore it, maybe for their own benefit, or maybe they have some interest. So in that case, whether any other person can also file an application before the adjudicating authority? Yes, sir. Creditor Yes. can file that. Yes. Any member, creditor, can file an application. And what is the section for this? Section 47. 47. Section 47. 47 says a creditor, member or partner of a corporate debtor, as the case may be, can file the application to the adjudicating authority. And what the adjudicating authority will do? Adjudicating authority may order to reverse the transaction, and they will also require the IBBI to initiate disciplinary action against the liquidator or RP in such a case. Take it. So for And 46, sir, this I think this is yes, please.
This is applicable for only undervalued transaction, I think. 47 is applicable, I think, only for Yes, 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 undervalued undervalued transaction. transaction. Right. You Or are is it correct. for Yes, not for preferential transactions. You are correct. But definitely preferential transactions can also be challenged. Suppose RP files an application and he points out a particular transaction that it is an undervalued transaction, that is a preferential transaction. There will be other parties, definitely. They will also be called now. Suppose the creditor has created a security interest in favor of a guarantor. His loan was earlier unsecured, now they have made it secured and they did not acquire any new value. So it will be hit by section 43. Now when the RP will file the application under 43, so definitely the other party will also be called. So they can definitely dispute it before the adjudicating authority. I know. Now 46. 46 is relevant period during which the transaction must be entered into for it to be challenged as a transaction as undervalued is 2 years preceding the insolvency commencement date and 1 year. Okay. 47. 47. This section permits creditors, members or partners of the corporate debtor to make an application to the adjudicating authority to set aside a transaction as undervalued where the liquidator or professional has not reported such transaction to the adjudicating authority. Okay. Now, section 48. Section 48, this section sets out the orders that may be passed by the adjudicating authority, setting aside the transaction as undervalued. The order that may be given are aimed at reversing the effect of the undervalued transactions and requiring the person who benefits from such transaction to pay back any gains he may have made as a result of such transactions. Then section 49. Section 49 says there are certain transactions which are rendered into. There is a twilight zone. What is this twilight zone? Twilight zone is a period when there is not complete daylight and there is not complete darkness. So that is called as twilight zone. So the promoters know that the company is going to sink. So they may like to put certain assets out of the reach of the creditors. They may do some transactions with the intention of putting the assets of the corporate debtor beyond the reach of or otherwise prejudicial to the interest of the person who is making a claim or who may make a claim against the corporate debtor. So, but in 49, there is no time limit during which the transaction must have been entered into for it to be challenged as a transaction. So, the section 49 is also important. Section 49 says, and here there is no question of application. 49 says it simply he has entered into such transaction and the adjudicating authority shall make an order. In 49, it is not written who will file the application, whether the RP or liquidator. So in section 49, even the adjudicating authority may suo moto initiate action. It says the adjudicating authority shall make an order. In 49, it is not written that who will file the application. Like in section 43, they have specifically mentioned that the RP or liquidator shall file the application. Okay? Section 43(1), where the liquidator or the RP as the case may be is of the opinion. Then 45. 45 says RP or liquidator is of may be on an examination of transactions. Okay? He determines that such transactions were made and which were undervalued. Okay? 47 is application by creditor, but in 49 there is no such thing. Simply the fact of being a transaction which has the effect of putting the assets of the corporate debtor beyond the reach of the claimants. Okay? So that is section 49. And in 49 there is no period also. Whether there is any period in 49? no, no, sir. So there is no such. Now section 50. What this section 50 says? Section 50 is just the opposite because in preferential transactions you are giving something. You are creating a security interest for the benefit of the creditor, surety or guarantor. In section 45, you are giving something either for free or at a value which is significantly lower. Okay. Similarly, in section 47, 47 also, the creditor is challenging, creditor member or partner is challenging. In 49, adjudicating authority is challenging. But in section 50, you have received some money, extortionate credit transaction. You have obtained a credit, but the terms are not reasonable. Here in section 50, what is of importance is that you have obtained a credit, but the terms are not reasonable.
So either you have taken a loan or you have availed goods or services and the period is 2 years preceding the insolvency commencement date. But the terms are exorbitant. You have taken a loan, but the terms are not reasonable. Terms are such that no reasonable person will enter into such transactions. Similarly, for operational debt, the terms are extortionate. And the period is 2 years, whether with a related party or with an unrelated party. Okay? And section 51, it says that the liquidator or RP, when he will make the application, the IA will order to restore or set aside or modify the terms of such transactions. ठीक है. 43. So 43, what it says? There is a transfer of property or there is a transfer of an interest of where this definition of property is given, whether it is given in IBC. Section 3, subsection 27. So section 3, subsection 27 Yes. talks of the meaning of property. So in 43, there is a transfer of property or there is transfer of an interest of the corporate debtor. Now section 327 defines property and what it includes: money, goods, actionable claims, land, every description of property, whether situated in India or outside India, and every description of interest, including present or future or vested or contingent interest arising out of or incidental to property. So, but whether there is a definition of interest, that is not there, but it can be taken as ownership rights or interest or security interest or beneficial interest. Okay. Now, persons with whom these transactions have taken place: creditor, surety or guarantor. Okay. Payment is made to such person on account of an antecedent. Antecedent means pre-existing financial debt or operational debt or antecedent other lie owed by the Existing. corporate debtor Yes. to such persons. Okay. Now, what is the effect? So, such transfer of property or interest, it results in putting such creditor or surety or guarantor in a beneficial position than it would have been in the event of a distribution of assets being made in accordance with section 53. So, what are the parameters? So, first of all, you have to identify the transfer of property. What is the property he has transferred or what is the interest he has transferred? First of all, you have to do this. Second is, you have to determine whether the transaction is with or for the benefit of creditor, surety or guarantor. Step 3, there is pre-existing financial debt or operational debt. And such transfer results in putting such creditor, surety or guarantor in a beneficial position vis-a-vis the waterfall mechanism. So we can change it. We can say that it is for the benefit of, rather instead of with, we can say is for the benefit. For the benefit of. ठीक है. चलिए. Now, who can find these transactions and who can apply resolution professional or liquidator? And application will be filed under section 43, subsection 1. What is the relevant time? 2 years and 1 year. Okay. Now, let us see some transactions and see whether these transactions they are covered under preferential or not. So, first transaction. Repayment to unsecured loan. Repayment of unsecured loan to promoter during the look back period while the debt of secured creditor is outstanding. So you have understood this transaction. There are two debts. Okay. One debt is owed to the promoter. Second is owed to the secured creditor. So you have paid the unsecured loan first during the look back period. So whether this will be preferential transaction or not? Yes. 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 Why?
because It's unsecured a loan transfer of comes more money. in priority as compared to secured credit. Yeah. ठीक है. Second, payment of old operational creditors other than regular business payments against supply of goods or services, while the debt of secured creditors or unsecured financial creditors are outstanding. So you have given payment to operational creditors. Debt of secured creditor or unsecured financial creditors is outstanding. Whether it is preferential, because they will ask like Yes, this sir. only. So what you have to see is where these two persons stand in section 53. In section 53, whether operational creditors will be paid first or unsecured financial creditors will be paid first. The important thing is they have clarified it, supply of goods or services, because operational creditors include employees also, but here they have clarified that it is against supply of goods, so it's a preferential transaction. Okay. Next, payment to an unsecured financial creditor while the debt of secured creditor is still outstanding. It is also preferential transaction. Payment to workmen and employees in the regular course of business. Whether No, sir. it is not preferential. Okay? It is covered under exception to section 43. Payment of any tax against the order of any authority or payment of regular taxes. There is an order No, of any not preferential. authority. This is also not preferential because it is covered under exception. Next, payment of old tax dues where there exists a risk of prosecution without any order from a court or authority. It is also not a preferential. It is a preferential transaction. Payment to a secured creditor in priority while the debt of other secured creditors is outstanding. So in secured creditor, they are making a distinction. It is preferential. Payment of secured debt against which the property of the directors is mortgaged would be considered as preferential transaction. Adjustment of debit balances of debtors with credit balances of other parties. This is also preferential because the priority will change. Allotment of flats or plots by a real estate company to supplier of goods or services before the CIRP. So there were suppliers of steel and cement. Now they have been allotted flats. Preferential. This is also preferential because Preferential. operational Preferential. you have changed to financial, and financial get priority. Okay. Now what is the relief from the adjudicating authority? So any property transferred in connection with the giving of the preference to be vested in the corporate debtor, उसको इफेक्ट ट्रांसफर कर दो. ठीक है. आपने पहले प्रॉपर्टी दी थी किसको? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी और गारंटर. नाउ इट विल बी वेस्टेड बैक विद द सीडी. Release or discharge in whole or in part of any security interest created by the corporate debtor. So if you have created any security interest, that will be released or discharged. If you have paid any sum, so order any person to pay such sums in respect of benefits received by such person from CD to the liquidator or RP. Direct any guarantor whose financial debts or operational debts owed to any person were released or discharged by the giving of the preference to be under such new or revived financial debt or operational debts to that person as the adjudicating authority deems appropriate. ठीक. आपने क्या किया था? आपने फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेट्स का पेमेंट कर दिया था. ठीक है. तो अब आपको दोबारा फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर बना देंगे. ठीक. सेक्शन 45. Either give something for free or you enter into a transaction with a person which involves the transfer. अब यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज भी है. क्या चेंज है 43 से? 43 में क्या लिखा था? क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर. क्या 45 में भी लिखा है क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर? 43 में व्हेन यू रीड 43 में लिखा ना, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर. तो यहां पर भी 45 में भी ऐसा कुछ लिखा है क्या? वी कैन अगेन रीड सेक्शन 45 फ्रॉम द बुक. ठीक है. ऐसा
कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। आपने क्या किया, किसी को भी दे दिया, जरूरी नहीं क्रेडिटर श्योरिटी और गारंटर को दिया है। इसमें देखिए ये फर्क है 43 और 45 में। सो व्हाट यू आर गिविंग, आइदर यू गिविंग समथिंग फॉर फ्री और you are entering into a transaction with a person which involves the transfer of one or more assets by the corporate debtor. Now, whether the word assets is defined in the IBC, the answer is no. Asset defined नहीं है। Asset की definition है क्या IBC में? नहीं है। For a consideration, the value of which is significantly less than the value of the consideration provided by the corporate debtor, and such transaction has not taken place in the ordinary course of business of the transaction. So in this case, the A may require an independent expert to assess the value of the transaction. Section 46, subsection 2. ठीक है। तो what is the distinction between 43 and 45? पहली बात, वहां लिखा है, क्या लिखा है, क्रेडिटर श्योरिटी और गारंटर, यहां मतलब लिखा है क्या? यहां नहीं लिखा कुछ। नो। ठीक है ना। और आपने यहां ट्रांसफर क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट डेटर। रेलेवेंट टाइम क्या है, यहां पर 2 ईयर्स है और 1 ईयर है। वहां पर एम्प्लॉय के लिए उन्होंने अलग बना रखा है क्राइटेरिया, 2 ईयर्स अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, है ना, रिलेटेड पार्टी। बट यहां पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर। ठीक है। अब 47 क्या बोलता है, अगर मान लो आरपी या लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर कैन ऑल्सो फाइल एंड अप्लाई टू ए इन केस इट इज नॉट बीन रिपोर्टेड बाय द आरपी और लिक्विडेटर। अच्छा, वेदर एनी आउटसाइडर कैन फाइल दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 47? भाई ये पर्सन हु हैज गॉट नो लोकस स्टडी, नो सर। हाँ, ही कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन। कौन फाइल कर सकता है, है। क्रेडिटर मेंबर और इस सेक्शन में नहीं फाइल कर पाएगा, अदर सेक्शन में कर सकता है, 47 में नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कौन फाइल कर सकता है। देयर इज अ केस लॉ ऑल्सो ऑन दिस, वो हमने केस लॉ में पढ़ा भी है, क्रेडिटर मेंबर और पार्टनर। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को। हाँ जी। Sale of luxury cars owned by the corporate debtor to related parties or unrelated parties at a value which is much less than the market value of the car. भाई कंपनी के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं, आपने क्या किया, उनको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टीज। दिस इज अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल भी पूछेगा वो, है ना। एग्जाम में सीधा सीधा सेक्शन तो पूछने वाला है नहीं। वो ये कहेगा भाई दो ऑडी कार थी, उन्होंने एक पार्टी को, उसकी बुक वैल्यू इतनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, रिलायजेबल वैल्यू इतनी है, और आपने इतने पे ट्रांसफर कर दी, है ना। वो ऐसे भी नहीं बोलेगा अंडर वैल्यूड, सीधा वो दो वैल्यूज दे देगा आपको। सेल ऑफ पेंटिंग्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स और एनी अदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू अनदर रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी एट अ वैल्यू विच इज मच लेस देन द मार्केट वैल्यू। Transfer of shares of subsidiary companies at a price which is less than the actual value. Purchase of any assets at very high value to keep the funds of the corporate debtor away from the creditors. ठीक है, ये 49 में भी कवर हो जाएगी। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर वैल्यू एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू, ये भी आपकी अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। बेसिकली एसेट होना चाहिए, ये सारे आप देखेंगे ये एसेट्स है ना। होगा क्या, these transactions will be declared as void and their effect will be reversed। ठीक है, यस। 49 में क्या फर्क है, ये ट्रांजेक्शन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 45(2) दैट इज अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इफ डेलिबरेटली एंटर्ड बाय द कॉर्पोरेट। यहां पर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है ना। 49 में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशन। मेरी वॉइस क्लियर है ना, कोई ब्रेक तो नहीं हो रही? हाँ जी। It is breaking, sir. इट इज Sometimes it is breaking. इट इज ब्रेकिंग, ओके। हम्म। ये what we can do is
एक मिनट, लेट मी, ये मैं थोड़ा सा इसको ना, okay. So we were at this section 49. In section 49, what is the difference? Section 49 में what is the difference? बताइए प्रदीप जी. Whether RP or liquidator should file this application or it is not necessary in No, section sir. 49. The adjudicating authority can take up on a suo moto. Right. So section 49, it nowhere mentions that the RP or liquidator should file this transaction. So it simply says, it starts with the words where the corporate debtor has entered into. So the fact of entering into a transaction at an undervalued is important. So there are two sections for undervalued transactions. One is 45. In 45, RP or liquidator, he has to examine the transactions. But in 49, simply the fact of entering into undervalued transaction is important and the adjudicating authority shall make an order. ठीक है जी, this is the difference. And what is the intention? Intention is for keeping the assets of the corporate debtor. Now in 45, whether intention is important in section No, 45? no, sir. In section 45 also the intention is not important. But in section 49, the intention is important. So the intention is the, Deliberately entered. yes, it was deliberately entered. The word deliberately is not used in section 43 or 45. Okay? So this transaction was, and what is the idea behind all these PUFE transactions? The idea is maximization. So if such transactions are done which result in diminution of value, so then their effect is reversed. ठीक है? So it was deliberately entered into by the corporator for keeping the assets of the corporate debtor beyond the reach of creditors or in order to adversely affect the interest of such creditors. ठीक है? So the adjudicating authority shall make an order. In 49, whether period is given, any period, No, no, sir. there is no period also. ठीक है? 43 में period दिया हुआ है 2 years and 1 year. और 43 और 45 में what is the difference in the period? 43, Employee. हाँ एम्प्लॉय, ठीक है ना, हाँ. और 49 में कोई पीरियड भी नहीं दिया हुआ. ठीक है. So the adjudicating authority shall make an order restoring the position as it existed before such a transaction, as if the transaction had not been entered, and protecting the interest of persons who are victims of such transactions. ठीक है. Now I think my voice is clear. Yes, sir. है ना, अभी ब्रेक नहीं हो रही ना. Yes, yes. ठीक है. Yes. चलिए सेक्शन 66. 66 भी इंपॉर्टेंट है. 66 भी इसके साथ ही रिलेटेड है. ये क्या है? फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, PUFE. तो इसमें भी दो सेक्शन, देयर आर टू सेक्शन, 66(1) एंड 66. 66 क्या बोलता है? 66 सेक्शन बोलता है इफ ड्यूरिंग द CIRP और लिक्विडेशन it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with the intent to defraud creditors. So the intention is important. Or for any fraudulent purpose. The adjudicating authority may, on the application of the RP, pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. So here, they are not referring to any particular transaction. They are referring to carrying on of the business as a whole. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. Any business of the corporate debtor has been carried on. They are not referring to any particular transaction. They are not referring to any creditor, surety or guarantor. They are not referring to undervalued or not. They are referring that the business is conducted with the intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose. Section भी important है, fraudulent trading or wrongful trading. So the adjudicating authority may, on the application of the resolution professional, pass an order that any persons, and they in this section they make the persons personally liable. ठीक है. They say that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions
to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. ठीक है. So in the matter of Edelweiss Asset Reconstruction Company versus RTIL, NCLT Mumbai held that the scope of Section 66 is to demonstrate that the business of the corporate debtor has been carried on with the intent to defraud its creditors or for any fraudulent purpose. Therefore, while looking into the purported alleged fraudulent transaction, it has to be clearly established that the transaction were made with the intent to defraud or fraudulent purpose. ठीक. Now, when the transaction has taken place in 66, before the insolvency commencement date, ठीक है. ठीक है. And when director knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of a CIRP in respect of such corporate debtor, and such director or partner did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debtor. ठीक है. Because directors, they are in no business, so they know that the ship is going to sink, and they did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debtor. ठीक है. Now, what are these common fraudulent transactions? Any transaction with the objective of keeping the asset or property of the corporate debtor away from the creditors. Manipulation in books of accounts or other records of the corporate debtor to deceive the creditors. Use of forged documents and records to obtain sanction and disbursement of credit facilities. For example, bogus exchange bills, sale bills for discounting, export and import bills for discounting. Falsification of books of account by recording fake transactions of sale and purchase for obtaining increased credit facilities from banks or financial institutions. Falsification of books of account by making entries of bogus expenditure for diversion of funds of the corporate debtor for personal gains by the management. Falsification of books of account with the objective of increase in the assets of the corporate debtor in the books of account for renewal or additional credit facilities from banks. So all these are examples of fraudulent transactions. Siphoning of inventory or stock of the corporate debtor by showing increased consumption by falsification of books of account. Siphoning away funds of the corporate debtor by resorting to bogus transactions causing loss in the books of account for personal gain of the management. Fraudulent removal of property causing loss to the creditors. Undervalued transactions with fraudulent intent causing loss to the security interest of creditors for unknown gain to management. So, these are the examples of common fraudulent transactions. Now, what is the relief? There, they make them personally liable. So, any person who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. And that a director or partner shall be liable to make such contributions if, because they can also show that, okay, they did it with an honest intention and it was just a wrong decision. The intention was not fraudulent. है ना? So fraudulent intention has to be proved. So what is important is that such director or partner knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of CIRP, and such director or partner did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debt. ठीक है. 50s extortionate credit transactions. Here the period is 2 years. 66 में whether there is any period, यहां पर कोई पीरियड है क्या 66 में फ्रॉडुलेंट नहीं ट्रांजेक्शन? सर, नो सर, यहां कोई पीरियड नहीं है ना. ऐसे ही 49 में भी कोई पीरियड नहीं है. 50 में क्या बोलता है? 50 में 2 इयर्स का पीरियड है, चाहे रिलेटेड पार्टी हो चाहे अनरिलेटेड पार्टी, दोनों के साथ ही आपको अलग अलग पीरियड भी याद रखना है ना. तो ये जो एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या होगा, आपका पीरियड ही 2 साल का. So corporate debtor raises financial or operational debt during the period within 2 years preceding the insolvency commencement date, and the terms are such which required exorbitant payments to be made by the corporate debtor. ठीक है. And terms are unconscionable under the principles of law relating to contracts. ठीक है. तो रेगुलेशन 5 में ये इसका डिटेल भी दे रखा है, कौन सी ट्रांजेक्शन जो है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. The provisions of this section is not applicable to debt extended by any person providing
financial services which are regulated by a financial sector regulator. So if there is a credit card company which is giving all these which are charging exorbitant rate of interest, so it will not be considered as extortionate transaction because it is regulated by a financial sector regulator. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, टेकिंग अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज और अदर देन रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि यहां पर दोनों के लिए ही 2 years का पीरियड है एट एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट एंड अनफेवरेबल टर्म्स, तो इट इज एक्सटॉर्शनेट. ठीक है. आपने डायरेक्टर से लोन ले लिया और कह दिया भाई अब आपको 3% पर मंथ का इंटरेस्ट देंगे, तो ये एक्सटॉर्शनेट मान लीजिए. बोरोइंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और एसोसिएट कंसर्न्स एट हाई इंटरेस्ट रेट, यस. अवेलिंग लोन फ्रॉम एनबीएफसी एट 30% पर एनम इंटरेस्ट, ये माना जाएगा नहीं माना जाएगा? No, sir. नो, because it is financial service availing credit card loan against corporate cards. आपके पास कॉर्पोरेट कार्ड है, उसके अगेंस्ट में आपने क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया. Yeah, this is no, sir. हाँ, दिस विल ऑल्सो नॉट बी कवर्ड. ठीक है. एट हाई इंटरेस्ट नो, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. तो क्या रिलीफ होगा? रिस्टोर द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू सच ट्रांजैक्शन, सेट असाइड द होल और पार्ट ऑफ द डेट क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, modify the terms of the transaction, require any person who is or was a party to the transaction to repay any amount received by such person, or require any security interest that was created as part of the extortionate credit transaction to be relinquished in favor of the liquidator or the RP. ठीक है. तो बेसिकली रिवर्सिंग द इफेक्ट. ठीक है. ये 43 है, ये आप देख सकते हो, ये हमने पहले भी डिस्कस कर ही लिया है. एक्सेप्शन ये हो ही गई हमारी. Now, what are the indicative points to be looked into for preferential transactions? Transfer of or sale of assets to creditor under indirect control or ownership to keep the asset away from the reach of a genuine creditor in an expected CIRP situation. Setting of the receivables against selected payables or creditors. Creating security interest which is otherwise valid shortly before the commencement of CIRP to favor certain creditors at the cost of other. भाई पहले आपका अनसिक्योर्ड लोन था, आपने क्या किया? CIRP कमेंसमेंट डेट से पहले ही उसको सिक्योर्ड बना दिया. इंस्टांसेस ऑफ पेमेंट्स टू ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर इज अंडरवैल्यूड, अंडर सिक्योर्ड एंड द क्रेडिटर रिसीव्स मोर देन दे वुड हैव थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस. अच्छा, मान लीजिए इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो वो उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? Sir, सपोज, this is the prerogative of RP यस, during the ऐसा. CRP period. हाँ, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद में सपोज ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज, सपोज द कंपनी टेक्स इंटरिम फाइनेंस, इंटरिम फाइनेंस ले सकती है ना, एंड दे हैव गिवन द सिक्योरिटी ऑल्सो, दे क्रिएटेड ए चार्ज, क्योंकि इंटरिम फाइनेंस जो ले रहा है ही विल लुक फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो, बोलेगा भाई मैं, तुम्हारी कंपनी पहले डूबी हुई है, मैं काय को इनको पैसा दूं, है ना, तो ही विल रिक्वायर सम सिक्योरिटी ऑल्सो. तो क्या वो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? No, sir. No, नहीं, sir. क्यों क्यों नहीं आएगी? This is because the entry fund is taken for the running the CRP, हाँ. and this is what we get approval after getting approval of COC. हाँ, इसमें क्या है कि ये कवर्ड है एक्सेप्शन में. एक्सेप्शन में क्या कवर्ड है? दे आर गेटिंग न्यू वैल्यू. ये जो सच सिक्योरिटी Yes. इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको पैसा मिल गया. ठीक है ना. एंड वॉज गिवन एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द साइनिंग ऑफ ए सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वॉज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी. ठीक है. बेसिकली क्या है, जैसे आपने यू वांट सम सप्लाईज. ठीक है. भाई सप्लायर इज नॉट विलिंग टू गिव यू द क्रेडिट, सो वो चाहता भाई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, तो यू कैन क्रिएट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना. इंटरेस्ट फाइनेंस के अलावा इट कुड बी फॉर सप्लाईज ऑल्सो, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा बिकॉज यू आर गेटिंग सम न्यू वैल्यू. बट ऐसा नहीं कि पहले से ही देना था आपने, आपका अनसिक्योर्ड लोन था ऑलरेडी, आपने उसको सिक्योर्ड बना दिया, तो वो दैट विल बी हिट बाई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन. बट इफ यू आर गेटिंग न्यू वैल्यू and it is registered with the information utility on or before 30 days after the corporate data receives possession of such property, तो फिर it will not be hit by 43. और फिर उसमें 28 भी आ जाता है.
इफ वी रीड सेक्शन 28, तो अजय जी ने बिल्कुल सही बोला। तो सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेक्शन 28 ये बोलता है कि भाई अगर आपको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, सेक्शन 28(1)(b), so RP will not do any of these things without the prior approval of COC, create any security interest over the assets of the corporate debtor, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो इट हैज टू बी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ COC। अंडर वैल्यूड, ठीक है। बट इसमें भी अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ है तो वो फिर ट्रांसफर इसमें इफेक्ट नहीं होगा। उसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि यू आर ट्रांसफर, यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया? एसेट्स, ठीक है। सपोज देर इज ए प्रॉपर्टी, देर इज ए होटल प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड से एट ए प्रोमिनेंट लोकेशन, बट अभी क्या हो गया, वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्लाईओवर है स्टार्टेड, सो नाउ द लोकेशन इज नॉट नॉट दैट प्रोमिनेंट, है ना। एक्सेस टू द होटल नाउ इट इज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन of that flyover, and that flyover will take 5 years. So now the property value has gone down. Now if they transfer the asset at lesser value, so it will be in ordinary course of business, ठीक है ना। तो that will not be hit। तो आपको देखना है कि whether it is in ordinary course of business या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ट्रांजेक्शन कुड बी विद एनी पर्सन। यहां कोई जरूरी नहीं कि क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर है ना, कोई भी हो सकता है। तो क्रेडिटर, श्योरिटी, गारंटर के अलावा कौन हो सकता है? भाई ना वो क्रेडिटर है, ना वो श्योरिटी, ना वो गारंटर है, कौन है ये? हाँ जी अजय जी। भाई ये तो कहता है एनी पर्सन। देखो 43 45 में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज वहां पर एक ट्रांजेक्शन पहले हो चुकी है, आपने डेट पहले ले चुके हो, आपने अब क्या किया है, अब थोड़ा सा आपने प्रेफरेंस चेंज कर दिया 43 में। पहले अनसिक्योर्ड लिया था, अब उसको सिक्योर्ड बना दिया। नया कुछ मिला नहीं। अगर अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड बनाने के लिए कुछ मिल गया हो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको कुछ नहीं मिला, आपने उसको प्रेफरेंस दे दिया, ऑपरेशनल को फाइनेंशियल बना दिया, अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड बना दिया, है ना। इस तरह से यहां क्या है, ये जरूरी नहीं कि वो पहले कोई ट्रांजेक्शन थी, ये नई ट्रांजेक्शन है। दोनों में फर्क ही है। वो क्या है, वहां एंटीसीडेंट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या अदर लायबिलिटी। यहां वैसा नहीं है 45 में, इट इज विद एनी पर्सन, ठीक है। And it was a transfer of property from the corporate debtor to such person, and consideration is significantly lower. और 49 में क्या फर्क है? 45 और 49 में थोड़ा सा फर्क है। 49 में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, 45 में इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 में हो सकता है जेन्युइन ट्रांजेक्शन भी हो, लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा, है ना। और 49 में क्या है, यहाँ इंटेंशन ही बैड है। दोनों में फर्क है, दोनों ही अंडर वैल्यूड है। 45 वाली भी अंडर वैल्यूड है, 47 वाली भी अंडर वैल्यूड है। 47 में क्या है, क्रेडिटर और दिस दिस आरपी और लिक्विडेटर हैज नॉट रिपोर्टेड, तो फिर क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर इज रिपोर्टिंग। 45 47 ये डिफरेंस है। और 49 में क्या है कि इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज बैड, है ना। और 49 में कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। तो 45 में क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, और 49 में इट इज विद ए मेलाफाइड और रॉन्गफुल इंटेंट। लुक बैक पीरियड प्रोवाइडेड है, इसमें कोई लुक बैक पीरियड नहीं है, ठीक है। एक्सट्रोस्टेट आपने देख ही लिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग? देखो एक तो है रॉन्गफुल। रॉन्गफुल का मतलब क्या है कि यू हैव done this transaction recklessly or negligently which might affect the creditor's liability। और यहां पर क्या है, dishonest intention is mandatory fraudulent में, ठीक है। आपने क्या किया, बोगस प्रॉपर्टी के पेपर बनाए, है ना, और पेपर बना करके उनसे लोन ले लिया, तो ये फ्रॉडुलेंट है।
नेसेसरी एलिमेंट ऑफ नॉलेज अलॉन्ग विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज रिक्वायर्ड। और उसमें क्या है? नेग्लिजेंस। टाइप ऑफ लाइबिलिटी, द ऑफेंस अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लाइबिलिटी एज वेल एज सिविल लाइबिलिटी सिंस इट इन्वॉल्व्स फ्रॉड। और इसमें क्या होगा? रॉन्गफुल ट्रेडिंग में सिविल लाइबिलिटी होगी। इट इज प्राइमरली ड्यू टू लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस। रेलिवेंट टाइम पीरियड, तो प्रेफरेंशियल या अंडर वैल्यूड में 1 ईयर या 2 ईयर्स है, रिलेटेड पार्टी 2 ईयर्स है, अदर देन रिलेटेड पार्टी 1 ईयर। ठीक है। और फिर एक्सटॉर्शनेट में सीधा 2 ईयर्स है, चाहे रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो। लेकिन 49 में और 66 में पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल, कितना भी पुराना हो सकता है। ठीक है। टाइम पीरियड है हमारा फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन विद इन 75 days, फॉर डिटर्मिनेशन 115 days, एंड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन 130 days। ठीक है, पहले 135 था, अब ये पीरियड 130 हो गया। इसके लिए कोई फॉर्म है क्या? वेदर देयर इज एनी फॉर्म फॉर फाइलिंग दिस ट्रांजेक्शन? भाई आप 43 की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म है क्या? हाँ जी। देयर इज नो सच फॉर्म, है ना? पहले तो था नहीं, अब हो तो पता नहीं, अभी भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। अभी तो कोई फॉर्म है नहीं। और सपोज द डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट कम, ठीक है, CIRP इज ओवर, तो वेदर दिस कैन कंटिन्यू? Yes, sir. Can हाँ, continue. बिकॉज 26, सेक्शन 26 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट दिस। सेक्शन 26 कहता है कि भाई CIRP प्रोसीडिंग्स और अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन जो है सेपरेटली चलती रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट टू इफेक्ट प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 26। The filing of avoidance applications under clause J of subsection 2 of section 25 by the RP shall not affect the proceedings of the corporate insolvency resolution process। ठीक है। 25(2)J, 25(2)J क्या बोलता है? 25(2)J में फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस, ये ड्यूटीज हैं आरपी की। ठीक। ये भी पूछ सकता है कि ये जो ड्यूटी है ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है? ड्यूटी आपके सेक्शन 25(2)J में कवर्ड है आरपी। ये भी हो गया। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, दिस यू कैन गो थ्रू, इसमें कोई खास बात नहीं है। भाई आपको देखना भी तो पड़ेगा ना बुक्स में से कहाँ से मिलेगा आपको। आपको वेरिएशन मिल गई प्रॉफिट लॉस में, है ना, कुछ ट्रांजैक्शंस मिल गई, हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस मिल गई, इस तरह से। दिस कुड बी ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ये IBPI का एक स्टेटमेंट था, उसको ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई कोई उसको PUFE ट्रांजैक्शन मिले ही नहीं, भाई CIRP ने बुक्स देख ली उसको मिली नहीं, हो सकता है क्या? Yes, हाँ। sir. हाँ बिल्कुल। अगर उसको नहीं मिली तो नहीं एप्लीकेशन फाइल करेगा, जबरदस्ती थोड़ी ही है, जरूरी नहीं हर केस में एप्लीकेशन फाइल करे कि हर एक CIRP में एप्लीकेशन ये फाइल हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी दूसरे को लगता है तो वो फाइल कर देगा, क्रेडिटर, मेंबर, पार्टनर, है ना। ट्रांजैक्शन ऑडिट क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते। ये जो अथॉरिटी है ये आप इन जनरल पढ़ लीजिएगा। द अथॉरिटी टू अपॉइंट ट्रांजैक्शन ऑडिटर, ये किसकी है? IRP, आरपी। एन अप्रूवल ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर फीस पेबल टू सच प्रोफेशनल नीड टू अप्रूव्ड बाय COC। अगर आप सेक्शन 28 भी देखो तो सेक्शन 28 में ट्रांजैक्शन ऑडिटर कवर नहीं है। सेक्शन 28 में कौन कवर्ड है? इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है। इफ वी रीड सेक्शन 28, सेक्शन 28 में ये बोलता है, ये make changes in the appointment or terms of contract of statutory auditors or internal auditors of the corporate data। तो ये ट्रांजैक्शन ऑडिटर उस पर कवर्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल में आता है। चलिए।
ये कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई इसमें आपने क्या किया कि यू हैव रिक्लासिफाइड द लायबिलिटीज फ्रॉम ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल डेट। ठीक है। So XYZ is a listed company whose second quarter results have been published. CIRP was initiated a few days before the start of third quarter of the financial year. Application for initiation of CIRP was admitted on 1/1/2022. ठीक है। On review of the books of accounts and audited financial statements, the RP noticed entries in the books as advance from customer and sundry creditors. उसको बुक्स में एंट्री मिली एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। A portion of the amount was transferred from advance from customer and sundry creditor to unsecured loan. भाई उसने क्या किया, बुक में एंट्री कर दी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या सन्ड्री क्रेडिटर को क्या बना दिया, अनसिक्योर्ड लोन, एक जनरल एंट्री पास कर दी। ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन थी, रिलेटेड पार्टी वाज आइडेंटिफाइड, नो लोन एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन। भाई अब अनसिक्योर्ड लोन में उसने पूछा कि भाई आपने इस एडवांस फ्रॉम कस्टमर को या सन्ड्री क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर दिया, आपके पास कोई लोन एग्रीमेंट है ना, कोई पर्पस है नहीं, नो कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, इन्फॉर्म बोला भाई वर्बल है तो, है ना, सपोर्टेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। क्लेम फॉर्म्स वाज फाइल्ड बाय देम एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह क्लेम फाइल कर दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग रिलेटेड पार्टी स्टेटस। Books of account of the CD and the ledgers of the parties for past years were looked into. It was finally confirmed that these are regular transactions of sale purchase of goods. ये तो सेल परचेज होती थी। So it was finally confirmed that these are regular transactions of sale purchase of goods and payments. Balance sheets of the parties were downloaded from ROC websites. Disclosures under related party transactions. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, एड्रेसेस ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड। तो वहां से पता चल गया कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है ना, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है। बाद में आपने क्या किया, इसको अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 43 से हिट हो जाएगी। ठीक है। मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ये किसी ने पढ़ी है ये पीपीटी या नहीं पढ़ी है, प्रदीप जी पढ़ी है आपने ये? Yes, सब sir, लोग I have पढ़े थे gone भाई, through. संडे को पढ़ेंगे। I have gone through, sir. ओके ओके ओके। तो ये वाला केस एक्सप्लेन कीजिए आपके पास, ये आपकी स्क्रीन पर है ना? हाँ. हाँ, यू कैन रीड इट एंड देन एक्सप्लेन। So, on a review of charge documents of the CD filed with the MCA, RP found that charge was created on the properties of CD. Unit of the CD declared locked in December 2017. Very next day, the entire unit mortgaged to the bank as collateral security for loan taken by a related party, not disclosed. Guarantee provided by the CD for the said loan, original land papers with bank, resolution applicant concerned about original property documents. No claim filed by the bank for 400 days after the CRP initiation, as the loan was performing in their books. Claim filed by bank a week before the last date of submission of resolution plan in the second round of EOI. No invocation of guarantee. Transaction auditor cites Supreme Court judgment in JP Infratech Limited. The mortgage of the property of the CD on behalf of its group entity to the banker cannot be काउंटेनेंस। countenanced. सो इट वाज Treated as ट्रीटेड एज, preferential transaction under Section 43 of the IBC. RP found that the party was related. तो This बेसिकली क्या है कि यू हैव, भाई आरपी वो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज दे आल्सो कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। भाई अगर आप, इफ यू सपोज इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यू डिस्क्लोज दैट ओके वी हैव गॉट दिस प्रॉपर्टीज, तो दे हैव द राइट टू लुक एट द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आल्सो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वहां थे ही नहीं, है ना। वो क्यों नहीं थे, क्योंकि बैंक के साथ मॉर्टगेज थे, है ना, Yes. एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसीलिए बैंक बैंक भी श्योर था। बैंक ने क्या किया, बैंक ने कोई अपना क्लेम फाइल नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी बुक्स में तो परफॉर्मिंग है बिकॉज वी हैव गॉट द सिक्योरिटी। गारंटी प्रोवाइडेड इन दिसंबर 2017 बिफोर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट
It was in breach of section 185. Definition of interested party. So papers received from bank indicated that personal property owned by the suspended board was released by the bank, substituting the CD's property. भाई पहले क्या था, एक डायरेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी, अब उस प्रॉपर्टी को निकाल दिया बैंक वाले ने और वहां से कंपनी की प्रॉपर्टी जो थी वो मॉर्गेज कर दी। थोड़ा सा एनाउंसमेंट भी कर दिया लिमिट में, ताकि वो न्यू वैल्यू भी नजर आ जाए, है ना। स्मॉल अनाउंसमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इन लिमिट्स। सीडी प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 20 करोड़। तो वो इस तरह से ये सारी ट्रांजेक्शन्स 43 की हैं। ये 66 की ट्रांजेक्शन है। सपोज देयर इज ए आरपी नोटिस सेल ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द सीडी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑन लास्ट क्वार्टर बिफोर CIRP। Transaction was backed by agreements to sell two land parcels executed with one company, which were later discovered to be a related party at two dates। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो कि आपकी डिफरेंट इसमें आ जाती है। तो यू कैन गो थ्रू दिस। इस केस में जो अनुज जैन वाला था उसमें हुआ क्या था कि इन्होंने ना कंबाइंड सेक्शन फाइल कर दी थी। कंबाइंड एप्लीकेशन शुड नॉट हैव बीन फाइल्ड अंडर 43 आप वेन एवर यू वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन यू हैव टू साइड द स्पेसिफिक सेक्शन ऑल्सो कि कौन से दिस ट्रांजेक्शन इज हिट बाई पर्टिकुलर सेक्शन। आप ऐसा नहीं कि दो तीन सेक्शनों का नाम दे दो, एक ही सेक्शन में आपको देना। भाई 43 में फाइल कर रहे हो, 45 में फाइल कर रहे हो, 47 में, 66 में, 49 में, 50 में, किस में, है ना। क्योंकि डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो डिफरेंट है, प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड और फ्रॉडुलेंट का। Now we have to see these PUFE transactions with section 29 also। क्योंकि सेक्शन 29 क्या बोलता है? सेक्शन 29 बोलता है, ये देखिए 29A(G). 29A(G) क्या बोलता है? If a person has been a promoter or in the management or control of a corporate data in which PUFE transaction has taken place and in respect of which an order has been made by the adjudicating authority। ठीक है। Now the point is, suppose an application has been filed। ठीक है भाई, ऑर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस केस में क्या हुआ, जेडी अरेजा में, इसमें ये देखा कि भाई इवन दो द सेड एप्लीकेशन वाज फाइल्ड ऑन 15/10/2018, नो सीरियस एफर्ट वाज टेकन बाय द आरपी टू प्रेस दिस एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल प्रायर टू एक्सेप्टिंग द रेजोल्यूशन प्लान फाइल्ड बाय द आरए। है ना। तो आपको ये भी देखना है कि सपोज आरए हैज फाइल्ड ए रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, बट पीयूएफई एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट दैट पर्सन, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपको दिस पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल हु हैज बीन ए प्रमोटर। ठीक। तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, सीओसी के सामने कम से कम आप ये पॉइंट ला सकते हो। भाई स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है ना, बट आप सीओसी को ये पॉइंट बता सकते हो कि भाई देखो ऐसा है, इसके अगेंस्ट में पीयूएफई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी फाइल्ड है, ऑर्डर नहीं आया हालांकि, है ना। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो 29A(G) इज नॉट अट्रैक्टेड, है ना। लेकिन हमें एफर्ट्स भी देखने हैं कि भाई जो आरपी जिसने एप्लीकेशन को फाइल की थी उसने क्या एफर्ट्स किए उसके।
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक केस में फार्मूला बनाया। क्या कहा इसमें, जेपी इंफ्राटेक में, तो relying on the Honorable Supreme Court's judgment of Anuj Jain, RP of JP Infratech versus Axis Bank, and taking into view the six-step formula formulated by the Honorable Supreme Court on deciding when a transaction would become a preferential transaction। ठीक है, तो इन्होंने ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया? पहला बोला, दिस इज द सिक्स स्टेप फॉर्मूला, sift through the entire transactions of CD for 2 years and identify the persons involved in such transactions into two categories। उन्होंने बोला भाई सीडी की पूरी ट्रांजेक्शन्स 2 साल की देख लो। ठीक है, ये जो 2 साल की ट्रांजेक्शन्स देखनी है, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? किसी सेक्शन में लिखा हुआ है क्या? या 43। नहीं, 43 नहीं, 43 तो बहुत बाद में। सेक्शन में लिखा 2 या 3 में लिखा हुआ है ये बात। सेक्शन 3 में देखिए, अगर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात देखते हो। हम्म, ये आपको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 इयर्स का आपको देना है ना ऑडिटेड अकाउंट्स। तो ये सिक्स स्टेप फार्मूला इन्होंने बताया। क्या बताया? कि भाई सबसे पहले तो सारी ट्रांजेक्शन देखो सीडी की 2 साल की, और देखो किस किस के साथ ये हैं, और इसको दो कैटेगरीज में बांट लो, रिलेटेड पार्टी एंड अदर अनरिलेटेड। ठीक है, नाउ अब बाइफर्केशन ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इनटू टू सबसेट्स, रिलेटेड पार्टी एंड अनरिलेटेड पार्टी, विद ईच सबसेट रिक्वायरिंग डिफरेंट एनालिसिस। ठीक है, नाउ एग्जामिन ईच सबसेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू फाइंड वेदर द ट्रांजेक्शन इज फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ, एंड वेदर बेनिफिशियरी स्टैंड्स इन द कैपेसिटी ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर। तो बेनिफिशियरी जो है वो क्या है? वो क्रेडिटर है, श्योरिटी है, या गारंटर? Scrutinize to find if the transfer is made for an antecedent financial debt or operational debt or other liability. Examine if that transaction puts such party in a beneficial position than it would have been in the event of distribution of assets. And RP, after all the above volumetric and gravimetric analysis of transactions, shall have to apply to NCLT for necessary order। तो ये सिक्स स्टेप फॉर्मूला बताया सुप्रीम कोर्ट ने अनुज जैन वाले केस में, जेपी इंफ्राटेक वाला जो केस था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारे केसेस हैं। Now let us see this transaction. ABC Limited, having three directors, A, B and C, had taken a loan of 100 crore from National Bank. On default of 4 EMIs, National Bank filed an application under IBC. Ramlal was appointed as an IRP and he made a public announcement of commencement of CIRP on 5/9/22. Ramlal was later confirmed as RP. While going through the books, IRP observed that the following transactions appear to be PUFE transaction. पहला, ट्रांजैक्शन नंबर 1, सी, हु हैपन टू बी द डॉटर ऑफ डायरेक्टर बी। एक डायरेक्टर है, ए बी और सी, तीन तीन डायरेक्टर है। ठीक है, अब ये बी की डॉटर है। बी की डॉटर कौन है? सी। सी, है ना। सी हु हैपन टू बी द डॉटर ऑफ डायरेक्टर बी हैड टेकन ए रेजिडेंशियल लोन। इसने रेजिडेंशियल लोन ले रखा था। ठीक है, डायरेक्टर भी है, एंड एबीसी लिमिटेड हैड गिवन ए गारंटी टुवर्ड्स द लोन। कंपनी ने उसकी गारंटी दे रखी है। Some of the installments were paid directly to the bank through company's account by debiting B's loan account। बी के लोन अकाउंट को डेबिट करके और कुछ ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली, कुछ ईएमआई डायरेक्टली दे दी। तो हमें ये देखना है कि ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं।
ठीक है, 1 मिनट। हाँ कुणाल। दूसरा देखिए, दूसरी ट्रांजैक्शन। बिसाइड्स दिस, एबीसी, ये पहली बताइए, पहली ट्रांजैक्शन क्या पीयूएफई ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी? आप Yes, sir. डायरेक्टली मान लो। Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों होगी है? Related party, sir. But no, sir, I think. हम्म। भाई कोई एंटीसीडेंट डेट है इसके अंदर? Yes, sir. No, there is no antecedent date. भाई सी को कुछ देना था क्या कंपनी ने? सी को कुछ देना तो था नहीं, उसकी नहीं, ईएमआई बट पेमेंट कर दे। हाँ। सी को कुछ देना नहीं था, बट विदाउट एनी कंसिडरेशन कंपनी has paid to the C's account, I think. That is a different, I think. नो, द So, पॉइंट इज वेदर देर इज एनी एंटीसीडेंट डेट, है या no, नहीं sir. इसके? No, no. नहीं. चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन टू। बिसाइड दिस एबीसी लिमिटेड हैड टेकन अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 25 lakhs फ्रॉम एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी। कंपनी ने लोन ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन 25 lakhs फ्रॉम एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी, इन विच एज फादर वाज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ए का जो फादर है वो, या हम सी के बजाय में डी कर देते हैं, ये जो पहली ट्रांजेक्शन है ना, इसमें हम डी कर देते हैं। सी सी वह तो सी भी हो सकता है, बट हम डी कर देते हैं। ठीक है, डी थी हु हैपन टू बी द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर। अगर सी करेंगे तो सी तो डायरेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए। एबीसी लिमिटेड ने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी से, जिसमें ए का फादर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ड्यूरिंग पास्ट 2 years ईएमआई ऑफ ₹5 lakhs हैड बीन पेड टू एबीसी कंसल्टेंट्स एलएलपी। ईएमआई दे रखी है इसमें, तो ये ट्रांजेक्शन क्या आएगी इसमें या नहीं आएगी? No, sir. हम्म। No, sir. क्यों? इसमें तो एंटीसीडेंट डेट है ना, लोन ले रखा है कंपनी एलएलपी से। But there is no transfer of property or. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गया ना जब लोन ले लिया तो। But that is a normal. नॉर्मल क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, इट इज पुटिंग इन इन बेनिफिशियल पोजीशन ना। Unsecured loan है, sir. भाई अनसिक्योर्ड लोन है ना, अनसिक्योर्ड लोन का आपने ईएमआई दे दिया। ये पहले तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना, ये जो फादर, ही इज द फादर ऑफ डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर के हम्म. फादर को आपने जो है ईएमआई का पेमेंट किया। अब बात यह है कि दूसरा, इसके साथ और सिचुएशन भी आनी पड़ेगी, है ना, कि भाई वेदर दिस अमाउंट वाज ड्यू और नॉट, या क्या था, एबीसी कंसल्टेंट्स ने अमाउंट तो ड्यू था ही, बट वेदर इट वाज इन प्रायोरिटी। इट इज ए ट्रांजेक्शन विद ए रिलेटेड पार्टी, टू दैट एक्सटेंट इज ओके। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, देयर इज नो एंटीसीडेंट ऑपरेशनल या फाइनेंशियल डेट, है ना। भाई उसने रेजिडेंशियल लोन ले रखा है अपना, और कंपनी ने गारंटी दे रखी है, और कंपनी से कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी डायरेक्टली, होता है बैंक ऐसा कंपनी में होता है नॉर्मली, है ना। चलिए ट्रांजेक्शन थ्री देखते हैं। एबीसी लिमिटेड हैड आल्सो वेंचर्ड इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। XYZ estates had supplied raw material towards construction of a residential tower. There was an arbitration clause in the agreement between ABC and XYZ estates. By virtue of arbitration clause, ABC Limited agreed to offer a residential unit to the partner X of XYZ estates. तो इसको इन्होंने क्या किया, रेजिडेंशियल यूनिट दे दिया। तो ये पीओएफई ट्रांजैक्शन है या नहीं है? Yes, sir. हम्म। क्योंकि आपने क्या किया, ऑपरेशनल डेट को फाइनेंशियल डेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, होम बायर बना दिया आपने उसको। Ramlal had appointed Mr. Mukul, his paternal grandfather's son, as a forensic auditor on a consolidated remuneration of 10 lakhs.
Mr. Mukul, after conducting the forensic audit, gave the following observations. चलिए, हाँ, ये ABC Limited had done some jugglery in the books of its real estate division. Transaction 4. Suppliers worth rupees 2 crore were found non-existent by fictitious entry कर दी suppliers की. These bills pertain to E, a suspected trader engaged in fake billing. However, payments have been made by creating the account of Z, who was a genuine trader, as per the instructions of E. ठीक है. Z had actually supplied the goods to E. ठीक है. Payments worth rupees 1 crore were done during June 2022 and payments worth rupees 1 crore were done in October 22. तो इस केस में क्या होगा? There is a siphoning of fund. हम्म. 2 crore was given against the fake bills, क्या? which was तो ये not आपका ये used. 40 ये 66 से कवर हो जाएगी ट्रांजेक्शन, है ना? Yes. Besides this, suppliers worth rupees 3 crore agreed that the actual supply of material services by them was only of 1 crore and rupees 2 crore was given back as cash to the son-in-law of director A. सप्लायर्स 3 करोड़ के सप्लायर थे. उन्होंने माना भाई हमने सप्लाई तो किया था लेकिन एक्चुअली सप्लाई 1 करोड़ का था और 2 करोड़ रुपए का हमने कैशबैक दे दिया था. किसको? सन इन लॉ ऑफ डायरेक्टर है. Income Tax Department and GST Department have also initiated proceedings against ABC Limited for income tax evasion and GST evasion. The demands raised by the Income Tax Department and GST Department are 2 crore and 1 crore respectively. Next transaction. ABC Limited was also into mining business. The forensic auditor observed that ABC Limited had entered into a royalty agreement with a local mining contractor. एक Okay, so here royalty is payable at the rate of 10% of the value of minerals extracted. ठीक है. ABC Limited has specifically stated in the royalty agreement that any liability accruing to third party shall be to the contractor's account. The mining contractor had defaulted on PF dues of the labor engaged at the site. Total PF dues were 50 lakhs. Besides this, royalty, which was earlier 10%, was drastically reduced to 3%. The reason given was that the extraction of the minerals in the mine had gone down drastically. ठीक है. तो एक्सट्रैक्शन फिगर्स आर एज अंडर. तो ये ऐसे एक्सट्रैक्शन फिगर्स हैं और आपके रॉयल्टी आपने 10% से 3% कर दी. तो ये है कुछ ट्रांजैक्शंस जो हमारे को देखना है कि भाई ये प्रेफरेंशियल है, अंडरवैल्यूड है, फ्रॉडुलेंट है या एग्जॉर्बिटेंट है, अलॉन्ग विद रीजंस. ठीक है. तो ये आप इनका सबका एक बार लिख दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस कैसी कैसी हैं. ठीक है. अब हमारे को ये पार्टी इन्वॉल्व पहले. ठीक है. यहां पर हम डी कर देते हैं, इसको सी के बजाय डी कर देते हैं और क्लियर क्लियर हो जाएगा. डी इज द डॉटर ऑफ बी. तो हमें पहले देखना है कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है. दिस इज रिलेटेड पार्टी. ठीक है ना. तो फिर हमें इसका क्लॉज देख लेना है कि क्लॉज कौन सा है, कौन से में वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर में आ जाएगा. एबीसी कंसल्टेंट्स क्या रिलेटेड पार्टी है या नहीं, XYZ है ना. तो सारे हमारे को सबसे पहले तो हमें रिलेटेड पार्टी देखना है. रिलेटेड पार्टी का भी हमने इसके अंदर दे रखा है. तो रिलेटेड पार्टी सबसे पहले तो आप एग्जामिन करिए कि वेदर इट इज अ रिलेटेड पार्टी. सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा ना. और उसके बाद में वी हैव टू सी विद आर देयर एनी ट्रांजेक्शंस वेयर वी डोंट हैव टू सी वेदर द पार्टीज आर रिलेटेड और नॉट. ये भी कुछ कुछ केसेस में हमारे को ये भी नहीं देखना है कि रिलेटेड है या नहीं है ना. कौन से सेक्शन है जिसमें हमें रिलेटेड अनरिलेटेड देखना ही नहीं है. विच आर द सेक्शंस वेयर वी डोंट हैव टू सी. 45 सर. हाँ जी. 45. हाँ, 45 में तो देखना. 45 में तो है ना 2 ईयर 1 ईयर. 49 में नहीं देखना, 66 में नहीं देखना.
45 भी तो देखना है ना, 45 का 6 46 में लिखा है ना। इफ यू रीड सेक्शन 46, यहाँ तो क्लियर है ना। देर वी हैव टू सी 46 talks of relevant period for avoidable transactions, no? 49 and 66, yes. हाँ, 49 and 66। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज द फैक्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द ट्रांजैक्शंस डन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू? भाई सपोज ए पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, वेदर इट विल हैव एनी इफेक्ट? दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड इन सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहता है? लेट अस सी सेक्शन 44। इफ वी रीड सेक्शन 44, section 44 explanation 1, for the purpose of this section, it is clarified that where a person who has acquired an interest in property from another person other than the corporate debtor, or who has received a benefit from the preference, or such other person to whom the corporate debtor gave the preference, had sufficient information of the initiation or commencement of the insolvency resolution process, or second, a related party, it shall be presumed that the interest was acquired or the benefit was received otherwise than in good faith, unless the contrary is shown. That means, in case the person has sufficient information of the initiation or commencement of the insolvency resolution process or is a related party, there is a deeming fiction. क्या? कि it was acquired otherwise than in good faith. ठीक है? Unless the contrary is shown. So now the onus is on the party to show that it was in good faith. And then explanation 2 is there. Just prior to section 45, in 44, last explanation 2, a person shall be deemed to have sufficient information or opportunity to avail such information if a public announcement regarding the CIRP has been made under section 13. So, the fact of public announcement is deemed to be having the sufficient information or opportunity. तो वहां पर फिर वो गुड फेथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा अगर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया है तो। ठीक है, ये नाउ वेदर द ट्रांसफर्स इफेक्टेड परसुएंट टू ए कोर्ट ऑर्डर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपको कहां से लेना है? प्रॉपर्टी एक्ट से लेना है, जनरल क्लॉज एक्ट से लेना है, या आईबीसी से लेना है ना? तो ये हमारे को देखना है। This is another case study which you can go through, and then we can discuss in the group. एक तो ये था हमारा, और इसके अलावा फिर क्या है? हमारे पास ना दूसरा भी एक वो था, ये वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल में ये पीयूएफई ट्रांजेक्शन हमने अलग कर दिया इसमें। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दिस इज द सेम फाइल। वही फाइल में से मैंने व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सट्रैक्टेड द रेलेवेंट पार्ट, वो जो था पीयूएफई ट्रांजेक्शंस वाला, है ना? मैंने सिर्फ उसको अलग से निकाल दिया इसमें। तो दिस ऑल्सो यू कैन गो थ्रू एंड देन वी कैन डिस्कस दिस। इसको भी डिस्कस हम कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, हैव यू गॉन थ्रू दिस? No, sir. This. Okay. Actually, this is the article on PUFE transactions, है ना? So I'll share this also with you. It is a part of the publication of IBBI. So I'll share this also with you, and you can go through. Any questions you have on PUFE transactions?
So what we will do is, you go through these case studies and then you can discuss it in the group. Group में discuss कर लीजिएगा. You can give your answers also, and then we'll discuss it further. ठीक है जी? Okay जी. Good night.